Good morning, respected parents and dear students. Welcome to your computer class. I am BY-BRAJESH Kumar. Today, we will discuss Chapter 3, that is, Charts in Microsoft Excel 2013. In this chapter, we will learn about what is charts, what are the elements of a chart, different types of charts, steps to create a new chart, and steps to add chart elements. As we know that Microsoft Excel is an application software that is used to arrange data in a tabular form and also helps to perform calculation based work. In this chapter, we will learn how to create chart. First point is, what is chart? Charts are graphical or pictorial representation of worksheet data. Data when represented in the form of charts makes it easier for users to quickly understand, compare and find patterns and relationships. चार्ट एक ऐसा इमेज है जो वर्कशीट के डेटा को पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करने का काम करता है। ऐसा करने से यूज़र काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं उन सारे डेटा को जो उन्होंने वर्कशीट में स्टोर किए हुआ है। साथ ही साथ चार्ट की मदद से हम लोग कंपेयर भी कर पाते हैं टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स को। Whenever we use with the help of chart, we can represent many type of datas like marks of students in different subjects, average temperature of various cities. Data represented using chart can be easily understood, interpreted and analyzed. जितने भी डेटा स्टोर किए जाते हैं चार्ट में उसे आसानी से समझा जा सकता है, इंटरप्रेट किया जा सकता है और एनालाइज किया जा सकता है। एक्सेल प्रोवाइड्स वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ट्स। एक्सेल हमें बहुत तरह का चार्ट प्रोवाइड करता है। इट आल्सो प्रोवाइड्स ऑप्शन फॉर कस्टमाइजिंग एंड इन्हांसिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ अ चार्ट। किसी भी चार्ट के प्रेजेंटेशन को और बेहतर बनाना हो तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट का यूज़ करते हैं। You can see in this figure 3.1 display some average scores of a student like English, mathematics. In figure 3.2 represent a graph chart of average score by a student in subject English and mathematics. Next point is elements of a chart. Before we learn about creating charts, you need to have an understanding of various elements that make up a chart. A chart is described using various elements. किसी भी चार्ट को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स कहलाते हैं उस चार्ट के। As you can see in the figure, this left side and right side are some elements of chart that is important for any chart. Let's discuss one by one of these elements. First is data series. It refers to the set of worksheet data that are plotted in a chart. डेटा सीरीज वो वैल्यू है जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं चार्ट में, जैसा कि आप देख सकते हैं। दिस इज अ डेटा सीरीज। दिस डेटा सीरीज इज रिप्रेजेंटेड इन चार्ट दिस, राइट। डेटा सीरीज वर्कशीट के उस डेटा को बोला जाता है जिसे हम लोग चार्ट पे प्लॉट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका चार्ट टाइटल। इट इज़ द हेडिंग ऑफ अ चार्ट। किसी भी
चार्ट का हेडिंग जो होता है वो चार्ट टाइटल कहलाता है। इट हेल्प्स अ यूजर अंडरस्टैंड व्हाट द चार्ट रिप्रेजेंट्स। ये मदद करता है यूजर को समझने में कि चार्ट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। Legend. The legend identifies each data series in a chart. Legend जो है वो हर एक डेटा सीरीज को रिप्रेजेंट करता है, पहचान करवाता है कि कौन सा डेटा किस कलर से आइडेंटिफाई किया गया है। Each data series is assigned a unique color or pattern to differentiate one data series from another. और legend में हर एक डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है विथ अ डिफरेंट कलर। As you can see in this figure, here all legends are represented like English by orange color, mathematics by yellow color. It is usually displayed on one of the side of the chart. और जब भी लीजेंड को रिप्रेजेंट किया जाता है, जब भी लीजेंड को प्लेस किया जाता है चार्ट में, तो वो किसी एक साइड में होता है, एक साइड यानी लेफ्ट साइड या राइट साइड। ओके, next one point is plot area. The plot area is the area containing the chart axis and grid lines. The area inside the box is the plot area. प्लॉट एरिया उस एरिया को बोलते हैं जिसमें चार्ट एक्सेस मीन टू से एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड ग्रिड लाइंस, इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट जिस एरिया में किया जाता है उसे हम लोग प्लॉट एरिया बोलते हैं। चार्ट area. The chart area is the entire area containing the chart and all its elements like plot area, titles, legend and data tables. चार्ट एरिया ओवरऑल सारे एरिया को बोला जाता है जिसमें चार्ट फॉर्म किया जाता है और जिस एरिया में सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, लाइक प्लॉट एरिया, टाइटल, लीजेंड, डेटा टेबल, डेटा मार्कर, एक्सेस टाइटल्स, चार्ट टाइटल्स, ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं चार्ट एरिया में। एक्सेस, एज वी नो दैट एक्सेस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ एक्सिस, x axis and y axis. When we create any chart, the chart made up of two axes, x axis and y axis. X axis is horizontal line and y axis is vertical line. In general, x axis or horizontal line represent categories of chart and y axis, that is vertical line, represent the value of the chart. Okay, next one is axis title. These are the heading given to the x-axis and y-axis. The title helps us in understanding what is being depicted on the axis. Axis title heading को प्रदर्शित करता है x-axis और y-axis पे, ताकि हम समझ पाए कि कोई भी चार्ट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा एक्सिस किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। Grid line. These are the horizontal or the vertical line in the plot area. These lines make it easier to identify the value of each data point on the chart. Grid line जो है वो horizontal और vertical lines के combination से बनता है और ये एरिया आपका प्लॉट एरिया के अंदर होता है। सारे के सारे ग्रिड लाइंस प्लॉट एरिया के अंदर होंगे जो रिप्रेजेंट करेगा हर एक डेटा वैल्यू को इन द चार्ट। ग्रिड लाइन छोटे छोटे लाइंस बॉक्सेस बने हुए होते हैं, ये प्लॉट एरिया के अंदर बने होते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है कौन सा वैल्यू कहाँ तक अप है, कौन सा वैल्यू मिनिमम और डाउन है। डेटा मार्कर, द डेटा मार्कर इज एनी सिंबल such as a bar, an area, a dot or a slice used to represent a value in a chart. Data marker especially एक सिंबल होता है जो रिप्रेजेंट करता है सारे वैल्यू को चार्ट में। डेटा लेबल, इट इज द टाइटल given to the data markers
in the chart. चार्ट में डेटा मार्कर को टाइटल प्रोवाइड करने का काम डेटा लेबल का होता है। यानी डेटा लेबल जो है वो बताता है कि कौन सा डेटा मार्कर रिप्रेजेंट किया गया है चार्ट में। नेक्स्ट वन इज डेटा टेबल। It is the table containing the value for each data series usually displayed below the chart. डेटा टेबल जो है वो आपका डेटा सीरीज से ही लिया हुआ वैल्यू होता है जो चार्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है, और जब भी डेटा टेबल क्रिएट किया जाता है तो वो जस्ट चार्ट के नीचे क्रिएट किया जाता है। एज यू कैन सी इन दिस फिगर, दिस इज द डेटा वैल्यू इन एट द लिस्ट पोजिशन और एट द बॉटम पोजिशन। Okay, next one point. Okay, these are all are the elements of chart. Now let's go to the practice zone. Here is a practice zone in which some component of a chart and its purposes given match the following with a correct option. First is plot area. Plot area, an area containing the chart, axis and grid lines. Mean to say, 1. Match with E. 2. Data marker. Data marker, any symbol such as a bar, an area, a dot or a slice used to represent a value in a chart. That is 2. Match with C. 3. Axis. Axis is the horizontal and vertical lines that surround the plot area used as reference point for measuring the data values being plotted on the chart. That means 3 is matched with D. 4. Grid line. Grid line is the horizontal or the vertical lines in the plot area used to identify the value of each data points on the chart. Mean to say, 4 is matched with F. 5. Legend. A box containing a unique pattern or color to identify each data series on a chart. Mean to say, 5 matched with A. And last one is chart area. Chart area is an entire area containing the chart and all its elements. Mean to say, 6 matched with option B. Rest part will be discussed in the next video. Thanks for watching.